Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. Today we will discuss about unicellular and multicellular organisms. By our detailed discussion on cell and cell organelles, now we can say that all living organisms are made up of cells because cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. Now we need to know that what is meant by unicellular and what is meant by multicellular. Students, आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और क्यों इन ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के नाम से जाना जाता है. As in our surrounding, there is a great variety of organisms are present. Some organisms are small in size, while other organisms are large in size. So, we classify organisms as unicellular organisms and multicellular organisms. Students, जब हम अपनी सराउंडिंग में ऑर्गेनिजम्स को देखें तो हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो साइज़ में बड़े हैं, जबकि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो साइज़ में छोटे हैं. इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. लेट अस डिस्कस unicellular organisms. Here, the word uni means single celled. So, unicellular organisms are those organisms that are made up of single celled. As you can see in diagram, there is only single cell is present. So, all the functions are carried by single cell in unicellular organisms. So, unicellular organisms are those organisms that are made up of single cell. Unicellular organisms को कैसे डिफाइन करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल हो, यानी ऑर्गेनिज्म का पूरा जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो सारे एक ही सेल के अंदर हो रहे हों. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इन ऑर्गेनिजम्स का साइज़ इतना छोटा होता है कि हम इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. तो स्टूडेंट, हम इनको भी कैसे ऑब्जर्व करेंगे? वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी सच ऑर्गेनिजम्स एंड द एग्जाम्पल इंक्लूड्स अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम. In the term multicellular organisms, here the word multi means many cells. And how can we define multicellular organisms? Multicellular organisms are those organisms that are made up of many cells. Multicellular organisms are those organisms that are made up of many cells. यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो. जिस तरह हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं. प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बिग साइज ऑर्गेनिजम्स हैं. इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जब हमने लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे और ये सेल्स जो हैं ये आपस में कलेक्टिवली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपस में इकट्ठे कंबाइन करते हैं और इस तरह से एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म specific function, so they are known as tissues, and in this way a whole organisms build up. Okay student, let us discuss unicellular and multicellular organisms through an activity. Organisms that are made up of more than one cell are called multicellular organisms. Different types of cells have different functions.
Many cells of the same type come together to perform the same function in a body. Can you name some multicellular organisms around you? Plants, dogs, and insects. Very good. I understand now that multi means many. So, the organisms must have many cells to become multicellular. Yes, but organisms can also be unicellular. Unicellular? Let's take a closer look. Why don't you get some water from the pond so we study it under a microscope? So, Spiky, what do you see? Oh, there are tiny insects in the water. No, Spiky, those are not insects. They are unicellular organisms. We couldn't see them before because a single cell is impossible to see with the naked eye, which is why we are using this microscope. So, what are unicellular organisms? Organisms that function as one cell are called unicellular organisms. These insect-like organisms are amoeba, paramecium, and euglena. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम. देन हमने डिस्कस किया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स. उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को कैसे डिफाइन करेंगे. पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन देखें कि वो जानदार जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल हों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, जिसमें मिसालें क्या हैं, बैक्टीरिया की, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक हमारे इर्द गिर्द मौजूद जानदार जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. इसकी मिसालों में आप जानवर और पौधे लिख सकते हैं.